So, good morning, everyone. In the previous lecture, we have started with this exercise. We have completed few sums on insurance. Now we are going to continue from question number 4. So let's begin with the solution for fourth. What it says, let's see. A building is insured for 75% of its value. ठीक है, बट वैल्यू जो है वो हमें दी नहीं गई है. वैल्यू इज नॉट गिवन टू मी, बट जो भी वैल्यू होगी 75% जो है वो रहेगा हमारा पॉलिसी वैल्यू, राइट. वी डोंट नो द वैल्यू, बट द पॉलिसी वैल्यू विल बी व्हाट 75% ऑफ द वैल्यू विच एवर वी टेक. The annual premium at 0.70% which amounts to 2625. मतलब उन्होंने हमें प्रीमियम भी दिया है और उन्होंने हमें रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है. ओके, सो प्रीमियम इज नोन, रेट ऑफ प्रीमियम इज नोन. If the building is damaged to the extent of 60%, करेक्ट. अगर बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है 60%, मतलब 1 लाख का अभी कितना हो चुका होगा. अगर बिल्डिंग 60% तक डैमेज हो चुकी है तो 1 लाख वाली चीज अभी आपको कितने में मिलेगी, 60,000 में मिलेगी. इट इज टू एन एक्सटेंट ऑफ 60%, वो भी ड्यू टू फायर. ओके, बोला हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर दी पॉलिसी. कितना हम क्लेम कर चुके हैं या कितना क्लेम हमें मिलना चाहिए ओवर दिस पॉलिसी. ओके, so let us start with the solution value. The very first thing is I don't know the property value, so I will say let the property value be x. Let the property value be x. अगर x प्रॉपर्टी वैल्यू है तो हमारा पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा. पॉलिसी वैल्यू विल बी 75% ऑफ एक्स. करेक्ट, क्योंकि उन्होंने 75% बोला है. इंश्योर्ड, इट मींस 75/100 ऑफ एक्स. अगर 25 की टेबल लगाई जाए सो इट टर्न्स आउट टू बी 3x/4. ठीक है, फिर उन्होंने हमें दिया है रेट ऑफ प्रीमियम. they have given us a rate of premium. कितना दिया है, 0.70%. ओके, रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70%. प्रीमियम का अमाउंट भी दिया है उन्होंने. they have also given me the premium amount and that is nothing but 2625. अभी आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब मेरे पास पॉलिसी वैल्यू हो. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू एंड द रेट ऑफ प्रीमियम. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू एंड द रेट ऑफ प्रीमियम. एनीवन, क्या है तीनों के बीच में रिलेशन. हमें प्रीमियम कब मिलता है, करेक्ट, हमें प्रीमियम कब मिलता है, करेक्ट, जब हम पॉलिसी वैल्यू पर रेट ऑफ प्रीमियम लगाएं. एवरीबॉडी एग्रीज. प्रीमियम निकाला किस पे जाता है, प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पर निकाला जाता है. यस और नो, यस और नो, एवरीवन, करेक्ट. तो प्रीमियम अमाउंट हमें दिया है उन्होंने 2625. पॉलिसी वैल्यू है हमारे पास 3x/4. rate of premium is 0.70%, means 0.70/100. Correct. So what I will get x as, x will be equal to 2625 into 4 into 100
divided by 3 into 0.70. Correct? 3 into 0.70. So Dev, Nikhil, everybody has got the value as 5 lakhs. करेक्ट. इसका उन्होंने क्या बोला है? डैमेज इज 60% ऑफ द वैल्यू. करेक्ट. डैमेज इज 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. ओके. सो द डैमेज is 60% of the value of the building. So 60% of 5 lakhs, that will be 3 lakhs. Correct. 60% of 5 lakhs will be what? 3 lakhs. और हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लेम. ठीक है, हमें क्लेम पूछा है ना, तो क्लेम की फॉर्मूला होती है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. करेक्ट. तो यहाँ से मुझे टोटल वैल्यू तो मिल गया 5 लाख. एक्स का वैल्यू मिला ना 5 लाख. सो ये जो एक्स का वैल्यू हमें मिला, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू. तो क्लेम के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो पॉलिसी वैल्यू इज 3/4 x. So that is 3/4 of 5 lakhs. Correct. So that turns out to be how much? If I cancel, it is 375,000. 3,75,000. That turns out to be our policy value. So what is the formula for claim? Claim is policy value upon property value into loss. So this will be policy value, that is 3,75,000 divided by, it is going to be 5 lakhs into loss is 3 lakhs. Chalo, quickly find me the value of the claim. So the amount of claim is rupees 2,25,000. So that becomes your question number 4. So question number 5. Let's move ahead with this question now. It says that a stock worth rupees 7 lakh was insured for 4,50,000. Okay. So हमें value of the stock दिया गया है. Correct. Property value. Sorry, I shouldn't write value. I should write it property value. So property value given to me is 7 lakh. ठीक है, फिर पॉलिसी वैल्यू हमें दिया गया है. Policy value given to us is 4,50,000. Okay. आगे, फायर बर्नड स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली. मतलब 3 लाख का तो पूरा का पूरा ही बर्न हो गया है. करेक्ट. मतलब क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस इज अ लॉस विच कैन नॉट बी नो रिकवर्ड. तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जितना स्टॉक बर्न हो चुका है. सो वैल्यू दिया है हमें ऑफ द बर्नड स्टॉक. वैल्यू ऑफ द बर्नड स्टॉक, सॉरी मैं बर्स्ट लिख रहा हूँ, सॉरी. वैल्यू ऑफ द बर्न स्टॉक कितना है? 3 lakhs. 3 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो चुका है. एंड बोला है एंड डैमेज्ड द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू. जो रिमेनिंग है, अभी मुझे बताइए, 7 लाख का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसमें से 3 लाख का पूरा बर्न हो चुका है, और जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना होगा? व्हाट विल बी द रिमेनिंग? करेक्ट, 4 lakhs, राइट. तो आपको ऐसे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ
remaining stock, the value of remaining stock will be total, sorry, property value minus burned stock. Correct. So that is going to be 7 lakh minus 3 lakhs. So that turns out to be 4 lakhs. करेक्ट. सो ये हो गया हमारा रिमेनिंग स्टॉक. दिस इज अवर रिमेनिंग स्टॉक and the remaining stock is been damaged to the extent of 75% of its value. इसका भी 75% डैमेज हो चुका है. राइट, दे हैव क्लियरली गिवन दिस 75% डैमेज्ड. करेक्ट. तो 75% डैमेज्ड. ओके, करेक्ट. रिमेनिंग स्टॉक is 75% damaged. इसका मतलब होगा 4 lakhs का 75%. So that turns out to be 3 lakhs. करेक्ट. अभी बोला है व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड. व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड. तो क्लेम की फॉर्मूला क्या होती है? क्लेम इज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. ठीक है. तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है हमारी? 4,50,000 की, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इज 7 lakhs. अभी लॉस दो हुए हैं. राइट, एक तो जो पूरा का पूरा बर्न हो गया, यानी कि 3 lakhs का, करेक्ट, कंप्लीटली बर्न टू एशेस, और जो रिमेनिंग था उसका भी डैमेज हुआ एंड इवन दैट इज 3 lakhs. सो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया? 6 lakhs. एवरीबडी एग्रीज? टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 6 lakhs हो जाएगा. सो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू इधर कितना आ जाएगा? 6 lakhs. एनी डाउट्स टू एनीवन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Okay, so quickly find claim. So approximately the answer turns out to be 385714.28 approximately. So now we are moving towards question 6. Let's read it. Question number 6. A cargo of rice was insured at 0.625%. Okay, to cover its 80% of its value. So I think it's a similar kind of sum. Again, they have given us that it covers 80% of its value and the rate of premium. And also see, premium is given. The premium paid was rupees 5250. If the price of the rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in the cargo. Simple. Again, I will say that since I don't know the property value, करेक्ट, तो मैं पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालूंगा? करेक्ट, इट इज 80% ऑफ इट्स वैल्यू. सो आई विल से लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी एक्स. ठीक है. तो पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू is 80% of the value, so it will be 80% of x. So 80% of x means 80 by 100 of x. So 80 by 100 means it will be 4x by 5. ये हो गया मेरा पॉलिसी वैल्यू. अब उन्होंने रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है हमें. दे हैव गिवन अस द रेट ऑफ प्रीमियम. So rate of premium is 0.625% and premium given to us is
rupees 5250. Now we know the relationship between the two. हमें पता है प्रीमियम किस पर निकाला जाता है, प्रीमियम जो है वो पॉलिसी वैल्यू पर निकाला जाता है. तो प्रीमियम इज पॉलिसी वैल्यू into the rate of premium, पॉलिसी वैल्यू into the rate of premium. करेक्ट. तो प्रीमियम दिया है हमें 5250 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने हमें 4x/5 into rate of premium is 0.625 by 100. Correct. So now we need to just find the value of x. So the value of x will be 5250 into 5 into 100 divided by 4 into 0.625. Correct. Let's quickly find the value of x. So the value of x, it turns out to be 10,50,000. करेक्ट. तो अभी इसमें मुझे पॉलिसी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है. अभी इन्होंने बोला है प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी. करेक्ट. तो 1 किलो का जो भाव है वो है ₹21. ठीक है, 1 किलो का भाव है ₹21 और हमें कितने मिले हैं 10,50,000. तो इसका भाव क्या होगा, लेट से द वैल्यू इज एक्स. तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये अजम्पशन के लिए मैंने एक्स लिया, आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी 10,50,000 बाय 21. करेक्ट. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी. नाउ इन द एग्जाम आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैंने किया है. मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इजी है, समझने में काफ़ी आसानी होती है. हेंस आई डिड इट. एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखेंगे. करेक्ट. यू विल राइट इट इन दिस वे इन द एग्जामिनेशन that if the value of rice, if the value of rice is rupees 21 per kg, is rupees 21 per kg, then the cargo contains, then the cargo contains 10,50,000 by 21 kgs. Correct. So that is turning out to be 50,000 kgs. Correct. So this is how you need to write. But every time what I do is I follow this technique which I have boxed it in black. It becomes easy, to calculate the things. It really becomes easy. Even though if you want to go ahead for the technique, do it roughly and on the left hand side or on the right hand side, and then you write down the final answer in the main sheet. करेक्ट. आप रफली वैसा कर सकते हैं, बट फिर उसको बॉक्स कर देना, क्योंकि कल वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, एक्स तो प्रॉपर्टी वैल्यू था तो उधर एक्स कौन सा लिया. करेक्ट. यू मे टेक वाई एंड देन यू सॉल्व इट. दैट्स completely fine with this work. So let's move ahead with question number 7. Let's read it. In with question number 7. 60,000 articles costing rupees 200 per dozen. ओके. तो आर्टिकल्स हैं 6,200 रुपया एक डजन. तो एक डजन में कितना आता है 12 आर्टिकल्स. इन 1 डजन देयर आर गोइंग टू बी 12 आर्टिकल्स. ठीक है, 1 डजन में 12 आर्टिकल्स. वेयर इंश्योर्ड फॉर फायर फॉर रुपीज दिस. वर इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू दिया है उन्होंने हमें. दे हैव गिवन अस दी पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू दिया है ₹2,40,000. ये हमारे पास अवेलेबल है. 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of the value.
फाइंड द अमाउंट टू बी क्लेम्ड। ओके, लेट्स गो ग्रेजुअली। टोटल हमारे पास आर्टिकल्स हैं 60,000। करेक्ट, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आई हैव इज 60,000। ठीक है, तो आई हैव गॉट द आर्टिकल 60,000। 200 रुपया एक डजन, तो पहले तो मुझे कितने डजन है वो मुझे निकालने पड़ेंगे। करेक्ट, सो आई विल फाइंड दैट 60,000 डिवाइडेड बाय 12, that is going to be the number of dozens. So 12 fives are 60, तो मेरे पास 5,000 डजन है। अभी एक डजन 200 रुपए का है। करेक्ट, एक डजन, वन डजन, करेक्ट, कॉस्ट रुपीज 200। करेक्ट, तो 5,000 डजन, करेक्ट, विल कॉस्ट मी say y। Correct, so the value for 5,000 dozens, value of 5,000 dozen will be equal to 5,000 into 200, and that turns out to be how much? 10 lakhs। तो मुझे मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू भी है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, लॉस निकालना है। क्यों, ये कैसे किया मैंने? वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्लेम, राइट। हमें क्लेम का फॉर्मूला मालूम है। क्लेम होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू है। अभी लॉस की तरफ बढ़ते हैं। बोला है 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड। ओके, पहली बिट निकालते हैं, लॉस अलग कलर से निकालते हैं। 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड। करेक्ट, 20% आर्टिकल्स जो हैं वो बर्न हो चुके थे। तो 60,000 का 20% कितना आएगा? 60,000 का 20% 12,000 रुपये। करेक्ट, सॉरी, इफ आई टेक इट इन रुपीज तो 10% होता है 6,000, तो 20% हो जाएगा 12,000। तो 12,000 आर्टिकल्स जल चुके हैं, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए ना, लॉस है ना, तो हमें तो वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? डजन्स में कन्वर्ट करूंगा। करेक्ट, तो मेरे पास 1,000 डजन आर्टिकल्स जो हैं वो जले हुए हैं। अगर एक की कीमत 200 थी, तो 1,000 डजन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1,000 डजन कितना हो जाएगा? 2 lakhs। करेक्ट, तो ये हो गया मेरा पहला लॉस। फिर बोला है 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज्ड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अभी 80% ऑफ 7,200 निकालना पड़ेगा। करेक्ट, वो मैं इधर नीचे निकाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखने के टाइम पे 20% के बाद ये 80% वाली बात लिखना। 80% ऑफ 7,200 आर्टिकल्स वर डैमेज्ड। करेक्ट, तो 7,200 आर्टिकल्स का 80%। करेक्ट, जो भी आएगा आप उसे डजन्स में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, सो व्हाट इट्स गोइंग टू बी द 80%? ओके, सो इट टर्न्स आउट टू बी 5,760। ठीक है, नाउ इफ आई डिवाइड इट बाय 12, सो 12 fours are 48, 9, and then I have 8s are 96, and then 0। करेक्ट, तो दिस इज द डजन्स। करेक्ट, अभी एक डजन 400 और 200 रुपए का था, तो 480 इंटू 200 मुझे वैल्यू मिल जाएगी मेरे दूसरे लॉस की। सो 48 टू इज 96, सो दिस विल बी 96,000। ये मेरे हो गए टोटल लॉस। करेक्ट, so now I can quickly find the value for claim। Policy value is 2,40,000 divided by property value is 10 lakhs into loss 2 lakh plus 96,000। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2,96,000
Correct. Quickly find me the value of claim. So claim turns out to be rupees 71040. Correct. So that is the value of claim. That's our final answer. So let us now move ahead with the next question. Question number 8. Let's have a read at it. It's quite easy sum for us to go ahead. Okay. So let us try to write it in a better way. Correct. So we are dealing with, say, solution number 8. Solution number 8. So I assumed let the policy value be, let the policy value be rupees 100. करेक्ट, याद रखना एक हिडन चीज है इसमें. 100 जो है, इधर देखो इसने क्या बोला था, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो इस 100 रुपीज के अंदर ही आपका प्रीमियम, अदर एक्सपेंसेस वगैरह सब आ जाता है. ठीक है. इट इज जस्ट आई एम गिविंग यू एज एन इंफॉर्मेशन कि जब मैं पॉलिसी वैल्यू 100 रुपया ले रहा हूं, तो इट इज इंक्लूडिंग द प्रीमियम एंड द एक्सपेंस. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो है 2%. मेरा रेट ऑफ प्रीमियम प्लस 0.75 जो है ये मेरा एक्सपेंस है. करेक्ट. तो मेरा टोटल रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2.75. दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल rate of premium. Correct. This will be my total rate of premium, that is 2.75 रुपीस. करेक्ट. और अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कार्गो की, तो मैं कैसे निकालूंगा, वैल्यू विल बी पॉलिसी वैल्यू में से जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं रेट ऑफ प्रीमियम में उनको माइनस कर दूंगा. तो मुझे ये कितना मिलेगा, 97.25. तो 100 रुपए पे 100 रुपया अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू है, तो देखो कार्गो की वैल्यू कम है, इट इज 97.25. तो 100 रुपए पे इट इज 97.25. तो 3,50,100 पे से x. So the value of x will be 3,50,100 into 100 divided by 97.25. Okay, so ninth sum we have already completed. We have already done in the previous lecture sum number 9, and the coming lecture will continue with the rest of the sums, and this chapter will get completed. Okay, until that, you all stay home, stay safe. Thank you.